Should I buy my own flat or rent it out? Hi everyone, this is Farnaz and welcome back to Ask Housing. A lot of people have been asking questions about whether I should buy a flat or rent it out. Today we will have a detailed discussion in this video. If you haven't subscribed yet, please subscribe and hit the bell icon. So चलिए शुरू करते हैं. There comes a time in most people's life when this big question arises. Should I buy or rent a flat? There could be various reasons for moving out in the world. You could like to be independent, start a family, or buy because you think it is a good investment. Do you know कौन से factors consider करने होंगे before making a decision? First, क्या आप afford कर सकते हैं? If not, then renting is the best choice. Some advantages of renting a flat. Renting is considered to be the cheaper than buying because आपको पता होता है कि आप कितना spend करेंगे in a year or two, which majorly are deposit and rent amounts. ना ज़्यादा पेपर वर्क होता है और ना ओवर इन्वेस्टमेंट होती है. बाइंग अ फ्लैट हैज़ प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स टू. इंडिया में अपना घर होना बहुत ही बड़ी बात माना जाता है. इन मोस्ट कैजुअल कॉन्वर्सेशन पीपल ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, क्या ये घर आपका है या रेंट पर लिया है? थोड़ा स्टाइल सिंबल माना जाता है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट्स राइट. इफ़ यू टेक अ हाउसिंग लोन आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है. दैट्स राइट. सेविंग्स. Check with your chartered accountant to refer Section 80C and Section 80EEA to know more about it. Some people are confident in stocks, some are in mutual funds, whereas some prefer buying a solid investment choice. It is a great achievement if you're the first person in your family to buy your own home. While the property has a fixed maintenance cost, it is usually appreciates over the period of time. ज़्यादातर property investments are highly profitable within a year's time if the growth potential of the area is high. Thorough research करो about the upcoming area, purchase करो और फिर आराम से wait करो for a year and accordingly sell करो and move to a bigger house. अगर आपको ये information useful लग रही है तो like, comment and subscribe. Are you wondering कि rent कब करना अच्छा होगा? Saving block करनी हो तो rent is the best idea. EMIs are always higher than the rent amount. Renting ज़्यादा economical होती है buying से. And if you have a transferable job, it is always better to go on rent because transfer कभी भी और कहीं पे भी हो सकती है. And owning a flat requires lot of regular maintenance. Renting में maintenance is not a headache. Repair work, leakages और बहुत सारी चीज़ों पर पैसे बचते हैं. Now talking about selling a property. Selling a property is not a quick process. ब्रोकर हायर करो, प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करो, मल्टीपल ट्रिप्स लगाओ विद इंटरेस्टेड बायर्स एंड तब होप करो दैट यू विल सेल योर प्रॉपर्टी एट योर डिजायर्ड प्राइस. बाय करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? फेस्टिवल टाइम. यस, फेस्टिवल के टाइम पे डेवलपर्स बेस्ट डिस्काउंट देते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय अ फ्लैट. जब अच्छे रेट पे आपको फ्लैट्स अवेलेबल मिलता है देन यू कैन जस्ट वे द प्रोसेस एंड डिसाइड टू बाय अ फ्लैट. बैंक बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स पर आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं. आजकल आपका क्रेडिट स्कोर ही काफ़ी है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है देन जस्ट गो फॉर इट. रेरा के बाद से इन्वेस्टमेंट रिस्क इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी कम हो गए हैं, स्पेशली फॉर वुमेन. द स्टैम्प ड्यूटी एंड द होम लोन रेट्स आर लोअर देन द एवरेज. चाहे रेंट करो या बाय करो, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ द डेवलपर ऑन द रेरा वेबसाइट. नाउ अ वर्ड ऑफ एडवाइस. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि नॉट मोर देन 30% ऑफ योर इनकम शुड गो इन योर EMIs. Yes. To know more detail about buying and selling a property, click on the link in the description below. Thank you for all your questions. Click on the bell icon now. If you like our information and if you have more real estate questions, then please like, comment and subscribe.